Problem number 35. Here we will focus on the ethical dilemmas related to genetic screening. Now, just to recall that genetic testing is an opportunity by which we can assess the genetic risk and we can also diagnose the genetic disease. Now, there are some limitations of genetic screening. The first limitation is that we cannot screen the whole gene about the mutation related to the particular gene. So we cannot identify the possible mutations in the whole gene. The second limitation related to genetic screening is that genetic screening or genetic diagnosis cannot provide us with the complete information that the family wants to know. So it remains uncertainty among the patients as well as among the family and also among the clinician regarding the decision that they have to take in future. Let's take an example of cystic fibrosis. In biotechnology, gene therapy is available for cystic fibrosis. For example, parents have been identified as the carrier of cystic fibrosis. जब प्रीनेटल डायग्नोसिस किया गया तो पता चला कि फीटस भी सिस्टिक फाइब्रोसिस पॉजिटिव है. तो यहाँ पे आप जेनेटिक स्क्रीनिंग के ज़रिए ये पता नहीं लगा सकते कि क्या फीटस कैरियर है सिस्टिक फाइब्रोसिस का. मीन्स द पेशेंट इज or he or she will contain the mutated gene, but he or she will not suffer from any disease or will not show any symptoms. So through genetic screening we cannot judge the severity of cystic fibrosis in the baby. So again this remains an ethical dilemma for the patient, for the parents as well as for the clinicians regarding the decision that they have to take regarding the continuity or regarding the abortion of fetus. Nowadays, newborn screening technology has been introduced, which is known as tandem mass spectrometry. इस टेक्निक के जरिए हम more than 20 genetic diseases के बारे में पता लगा सकते हैं. लेकिन ऐसे टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा कि अगर आपको पता चल जाए कि आपको ये जेनेटिक डिजीज़ फ्यूचर में होगी लेकिन जेनेटिक डिजीज़ अभी तक क्योर नहीं हो सकी. देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस ऑफ दैट जेनेटिक डिजीज़. देन अगेन द specific cure and prognosis of the particular genetic disease remain uncertain for the patient. So sometimes ignorance is a bliss. Apart from this, another limitation is that the results of genetic diagnosis may be inaccurate. It may be false positive or it may be false negative. कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन जेनेटिक डिजीज डायग्नोसिस टेस्ट गलत परफॉर्म किया गया है जिसकी वजह से वो नेगेटिव आ रहा है. इसे फॉल्स नेगेटिव टेस्ट कहा जाता है. इसके अलावा अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है और अगर आपने गलत टेक्निक का इस्तेमाल किया है और पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो दिस इज़ नोन एज फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट. इसके अलावा पॉजिटिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग अगर जेनेटिक डिजीज़ के लिए पॉजिटिव है तो हम फर्दर रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि क्लिनिशियन फर्दर अपने डिसीजन के लिए टेस्ट मज़ीद परफॉर्म कर सके. लेकिन keep in mind that there is no treatment available for the fetus before birth. So a positive prenatal test result creates a dilemma for the parents that what decision they have to take in the future. So the main goal of genetic screening is to do good and to reduce the harm. For example, BRCA and BRCA2 is responsible for breast cancer if any sort of mutation occur in these two genes. So through genetic diagnosis we can assess the risk that this patient has a risk to develop breast cancer in future, but we are not sure about the disease. So the certainty of the disease remains there.
इसके लिए बेहतर है कि अगर हम जेनेटिक डायग्नोसिस सिर्फ उन डिजीजेस के लिए करें जो कि ट्रीटेबल हैं. फॉर एग्जांपल फिनाइल कीटोन यूरिया विच इज कॉज्ड बाय अ सिंगल एंजाइम डिफेक्ट. अगर हम बेबी में डाइट कंट्रोल करें तो दिस डिजीज इज क्यूरेबल. अदरवाइज दोज जेनेटिक डिजीजेस विच आर अनक्यूरेबल, उनके लिए अगर हम जेनेटिक टेस्ट परफॉर्म करें तो इट रिमेन्स डायलेमा, एथिकल डायलेमा फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज फॉर द क्लिनिशियंस.